Prime Minister Narendra Modi says in the coming decade, young India will play a key role. Sharing his thoughts in the 68th episode of Mann Ki Baat program, the PM says today's youth believes in the system and also has an opinion on a wide range of issues. Says today's youth dislikes instability, chaos, nepotism. PM Modi urges countrymen to buy local products at least for the next 2-3 years, till the year 2022 when India completes 75 years of independence. Urges people to attach our status and pride with local products to fulfill Gandhiji's dreams of self-reliance. The PM talks about Himayat, a unique initiative for skill development and self-employment in Jammu and Kashmir as well as Ladakh that is changing the lives of many youth. Home Minister Amit Shah says the government is working to ensure that every parliamentary personnel gets to spend at least 100 days with their family. Says 35,000 new posts created for CRPF will lead to faster promotions of personnel. Lays foundation stone for new building of CRPF headquarters. President Ramnath Kovind presents 50th Dada Saheb Phalke Award to legendary actor Amitabh Bachchan. The award is Indian cinema's biggest honour. JMM leader Hemant Soren takes oath as Chief Minister of Jharkhand. 3 more ministers sworn in. And cold wave continues to give North India the chills. IMD issues red-coded warning for Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bihar. Namaskar, you're with the latest here on DD News and DD India. I'm Gautam Roy. Now, Prime Minister Narendra Modi today said that youth always dreams of doing something new and different. Addressing the nation through Mann Ki Baat program, the Prime Minister said that youth should contemplate on their responsibilities towards the society in the decade ahead. Prime Minister Narendra Modi addressed the last episode of Mann Ki Baat this year. He extended greetings to the countrymen for ushering in the third decade of the 21st century. 2019 की विदाई की पल हमारे सामने है। 3 दिन के भीतर 2019 विदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे, नए दशक में प्रवेश करेंगे, 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करेंगे। मैं सभी देशवासियों को 2020 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। Youth will play a leading role in nation's development in the coming decade. PM Modi said the youth today dream of doing something new, something different. Prime Minister asserted that youth today like order and system, and when they dislike it, they question the system too. इस दशक के बारे में एक बात तो निश्चित है, इसमें देश के विकास को गति देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, जो इस सदी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है। कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है, तो कुछ उन्हें जनरेशन जेड या तो जेन जेड ये भी कहते हैं। और व्यापक रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मीडिया जनरेशन है। हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पीढ़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है। कुछ नया करने का, अलग करने का उसका ख्वाब रहता है। On the occasion of Vivekananda Jayanti on January 12th, the nation will be celebrating the Youth Day. The Prime Minister said that every youth should definitely contemplate on his responsibilities and take a vow for the coming decade. Speaking on completion of 50 years of Vivekananda Rock Memorial, PM Modi said that this place has inspired every section, every age group towards national duty. मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से कई लोगों को कन्याकुमारी में जिस रॉक पर
स्वामी विवेकानंद जी ने अंतर्ध्यान किया था, वहां पर जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना है, उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पिछले 5 दशकों में यह स्थान भारत का गौरव रहा है। कन्याकुमारी देश और दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना है। राष्ट्रभक्ति से भरे हुए आध्यात्मिक चेतना को अनुभव करना चाहने वाले हर किसी के लिए ये एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, श्रद्धा केंद्र बना हुआ है। स्वामी जी के स्मारक ने हर पंथ, हर आयु के वर्ग के लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित किया है। PM also highlighted importance of ancient knowledge and remarkable history of Indian astronomy science and navigation techniques. He also shared information about the telescopes installed in various parts of the country to study the space. साथियों, भारत में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। आकाश में टिमटिमाते तारों के साथ हमारा संबंध उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भारत के अलग अलग स्थानों में बहुत ही भव्य जंतर मंतर है, देखने योग्य है। कुछ वर्ष पहले मैंने प्री मॉडर्न कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एंड वॉयेजेस इस पुस्तक का अनावरण किया था। ये पुस्तक एक प्रकार से तो मालम की डायरी है। मालम एक नाविक के रूप में जो अनुभव करते थे, उन्होंने अपने तरीके से उसको डायरी में लिखा था। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत काफी आगे है और हमारे इनिशिएटिव्स पाथ ब्रेकिंग भी है। हमारे पास पुणे के निकट विशालकाय मीटर वेव टेलीस्कोप है। In his address, Prime Minister Narendra Modi urged the countrymen to move ahead, keeping faith in the strength of 130 crore Indians, their capabilities and their resolve. Bureau Report, DD News. And the PM also urged people that as a mark of tribute to Mahatma Gandhi, they should buy local, that is Swadeshi products, especially till 2022, when the nation celebrates 75 years of independence. In 2019, Prime Minister Narendra Modi urged countrymen to buy locally made products as a tribute to Mahatma Gandhi and also to mark 75 years of India's independence in 2022. 2022 आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं। कम से कम ये 2-3 साल हम स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रही बने। भारत में बना, हमारे देशवासियों के हाथों से बना, हमारे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आग्रह कर सकते हैं क्या? मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता, सिर्फ 2022 तक, आजादी के 75 साल हो तब तक। और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए। स्थान स्थान पर नौजवान आगे आए, छोटे छोटे संगठन बनाएं, लोगों को प्रेरित करें, समझाएं और तय करें, आओ हम लोकल खरीदेंगे, स्थानीय उत्पादों पर बल देंगे, देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, वही मेरे आजाद भारत का सुहाना पल हो। इन सपनों को लेकर के हम चलें। Prime Minister Modi explained the importance of becoming self-dependent and leading a dignified life. In this regard, he highlighted the skill development and employment initiative Himayat under the government of Jammu and Kashmir. मैं एक ऐसी पहल की चर्चा करना चाहूंगा जिसने मेरा ध्यान खींचा, और वो पहल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिमायत प्रोग्राम। हिमायत दरअसल स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ा है। इसमें 15 से 35 वर्ष तक के किशोर और युवा शामिल होते हैं। ये जम्मू कश्मीर के वे लोग हैं जिनकी पढ़ाई किसी कारण पूरी नहीं हो पाई, जिन्हें बीच में ही स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 18,000 युवाओं को 77 अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से करीब 5,000 लोग तो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े हैं। हिमायत प्रोग्राम से अपना जीवन बदलने वाले इन लोगों की जो कहानियां सुनने को मिली है, वे सचमुच हृदय को छू लेती हैं।
The Himayat program has proven to be a boon for residents of J&K and Leh Ladakh. People have become self-employed and independent under the program. PM Modi also shared a few success stories under this initiative. परवीन फातिमा तमिलनाडु के तिरुपुर की एक गारमेंट यूनिट में प्रमोशन के बाद सुपरवाइजर कम कोऑर्डिनेटर बनी है। 1 साल पहले तक वह करगिल के एक छोटे से गांव में रह रही थी। आज उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया, आत्मविश्वास आया, वो आत्मनिर्भर हुई है और अपने पूरे परिवार के लिए भी आर्थिक तरक्की का अवसर लेकर आई है। परवीन फातिमा की तरह ही हिमायत प्रोग्राम ने लेह लद्दाख क्षेत्र के निवासी अन्य बेटियों का भी भाग्य बदला है और ये सभी आज तमिलनाडु की उसी फार्म में काम कर रही है। The Himayat program has brought a ray of hope in the lives of the people of Jammu and Kashmir and Leh Ladakh. It is a program which has not only provided financial independence to youth, it has also instilled a new confidence in them. Bureau Report, DD News. Well, apart from the Prime Minister's Mann Ki Baat, the day has also seen Union Home Minister Amit Shah laying the foundation stone for a new CRPF headquarters building by the side of Lala Lajpat Rai Road in New Delhi. The new building will have many green features like vertical green wall, rainwater harvesting, sewage treatment plant, among others. Hailing the personnel of the CRPF for their bravery, Home Minister Amit Shah said that many of CRPF's personnel have made the supreme sacrifice for the nation. Amit Shah said that CRPF played a prominent role in combating terrorism and militancy in Punjab and Tripura. त्रिपुरा और पंजाब के आतंकवाद को आज पूर्णतया समाप्त कर त्रिपुरा और पंजाब शांति से जी रहे हैं। इसमें सीआरपीएफ के जवानों का एक बहुत बड़ा योगदान है। मोर्चे पर जब जवान लड़ता है तो उसको शौर्य पदक वगैरह की विचार नहीं होता है, उसको होता है मेरी जमीन पर जितना हो सके उतने जल्दी मैं दुश्मन को खदेड़ कर बाहर कर दूं, एक गौरव के साथ वो लड़ता है। मगर देश की सरकार का फर्ज बनता है कि गौरव की गाथा लिखने वाले वो जवानों को सम्मानित किया जाए, अलंकृत किया जाए। Amit Shah also said that the government is considering various initiatives for the welfare of the family members of CRPF as well. The Home Minister said that the government is working to ensure that every paramilitary personnel gets to spend at least 100 days with their family. हमने तय किया है कि हर सशस्त्र बल का जवान कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ रहकर अपने परिवार की चिंता कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई है। मैंने सभी सशस्त्र बलों के डीजीज से सुझाव भी मांगे हैं। The Home Minister also said that the Home Ministry has created 35,000 new posts for CRPF. गृह मंत्रालय ने बी, सी और डी कैडर की समीक्षा में कुल 35,026 नए पद खड़े किए हैं और ये जो नए पद खड़े किए हैं इससे आप सबके प्रमोशन लगभग 1.5 गुना द्रुत गति से होंगे। सीआरपीएफ में 35,000 नए पद हमने खड़े किए हैं, इससे आपकी पदोन्नति खूब कम अंतराल के अंदर होगी, इस प्रकार की भी व्यवस्था करी। A border coordination conference was held in the national capital, chaired by Director General of the Border Security Force and the DG of Border Guard Bangladesh. Vivek Kumar Johri, DG of the BSF, said that the attack by smugglers on border guarding forces from both the sides have come down drastically during the last 3 years. In 2015 and 16, the attacks on BSF personnel by these criminals, whether Indian smuggler or Bangladeshi smuggler, was to the order of 350 plus, 360 and 350 types. And since last 3 years, it is always in 70s. This year it has gone 82, slightly more.
But you can see the effort with both the border guarding forces are putting in on this, and I'm sure you will understand that it is also the hard work of Bangladesh border guards by which this figure has come down. BJP Working President Jagat Prakash Nadda today said that his party believes in taking decisions in the interest of the nation. Addressing a function in New Delhi in the memory of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, Nadda assured that the party never shies away from its responsibility towards nation building. He also gave an example of the government's decision to abrogate Article 370 for the welfare of people of Jammu and Kashmir and Ladakh. आपसे प्रेरणा लेकर जब जब हमारी सरकार जहां-जहां आई, उन्होंने हमेशा, हमारी पार्टी के सरकारों ने हमेशा राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज हित में काम करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसीलिए जब आपका हमको समर्थन मिलता है, जब आपका सहयोग मिलता है, तो मैं पार्टी की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी में भी राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक भागीदारी में हम पीछे नहीं रहेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। इस बात का आपको हम ध्यान देंगे। Jharkhand Mukti Morcha leader Hemant Soren took oath as Chief Minister of the state today. Governor Draupadi Murmu administered him the oath of office and secrecy and at Morabadi ground in Ranchi. A host of dignitaries, including former Jharkhand Chief Minister Raghubar Das, Congress leader Rahul Gandhi, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, senior CPIM leader Sitaram Yechuri, RJ leader Tejasvi Yadav, among others, attended the oath-taking ceremony in Ranchi. Grand Alliance comprising JMM, Congress and RJD bagged 47 seats in the 81-member Jharkhand Assembly polls. Congress State President Dr. Rameshwar Oraon and former Jharkhand Assembly Speaker Alamgir Alam from the Congress Party and RJD legislator Satyanand Bhokta also took oath as cabinet ministers during the swearing-in ceremony. Veteran actor Amitabh Bachchan has been honoured with the Dada Saheb Phalke Award for his outstanding contribution to the film industry. President Ramnath Kovind gave away the award in New Delhi today. The 76-year-old actor has so far worked in over 190 films in a career spanning 5 decades. The Big B of Indian cinema made his debut in Saath Hindustani in 1969, but fame and recognition knocked on his door after the 1971 cult movie Anand and the road action comedy Bombay to Goa. Megastar Amitabh Bachchan expressed gratitude towards the government, the Information and Broadcasting Ministry and all the jury members after being conferred with the Gyanpith Award, with the Dada Saheb Phalke Award, I beg your pardon. मैं भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय पुरस्कार के जितने भी जूरी के सदस्य उनको मैं अपनी ओर से अत्यंत अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाऊं। सबसे ज़्यादा भारत की जनता का स्नेह और निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन रहा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस पुरस्कार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, अपना आभार प्रकट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। Now, Delhi continued to reel under a severe cold wave this morning, with the minimum temperature settling at 3.4 degrees Celsius, a notch above Saturday's minimum temperature. Delhi had recorded the season's coldest day on Saturday, with the minimum temperature dropping to 2.4 degrees Celsius. Dense fog enveloped the city, reducing visibility to less than 500 meters. While 13 trains were delayed for up to 6 hours due to the fog, the operations were normal at Delhi Airport and there were no diversions or cancellations. While the Palam Observatory recorded a minimum temperature of 3.2 degrees Celsius, mercury dropped to 2.8 degrees Celsius at Lodi Road. The fringes of the famous Dal Lake froze as mercury continued its free fall in Srinagar, which experienced the coldest night of the season at minus 6.2 degrees Celsius. The Met Office said minimum temperature across the Kashmir Valley and Ladakh Union Territory stayed several degrees below the freezing point, intensifying the cold wave in some areas in the region.
He said Srinagar city recorded the low of minus 6.2 degrees Celsius last night, down from minus 5.8 degrees Celsius the previous night. It was the coldest night of the season so far in the city, leading to freezing of the fringes of the Dal Lake and other water bodies, as well as water supply lines at several places. The ski resort of Gulmarg in North Kashmir recorded the low of minus 6.6 degrees Celsius last night, up from the previous night's minus 7.5 degrees Celsius. And there was no let-up in the freezing cold sweeping Haryana and Punjab as well, where Hisar was shivering at 0.2 degrees Celsius and Bathinda at 0.5 degrees. Hisar in Haryana and Bathinda in Punjab were the coldest places as night temperatures dropped 7 notches below normal limits. As the cold wave further tightened its grip, Chandigarh, the common capital of the two states, recorded the season's coldest night of the season so far at 2.9 degrees Celsius, a Met Department official said. Among other places in the region which were under the grip of bone-chilling cold included Narnaul, Sirsa and Rohtak in Haryana, where night temperatures settled at 1.5 degrees Celsius, 1.8 degrees and 1.6 degrees Celsius respectively. Now, medical students hail and appreciate the government for establishing new medical colleges in the valley, including Handwara and Anantnag in South Kashmir. As a major boost to the medical education and thereby improvement in patient care, Union Territory of Jammu and Kashmir will now have 10 medical colleges, besides having 2 AIIMS with medical colleges and 1 private medical college, which is already functional. In phase 1 of a centrally sponsored scheme for establishment of government medical colleges in existing districts and referral hospitals, Jammu and Kashmir was able to get approval for establishment of 5 new government medical colleges at Anantnag, Baramulla, Doda, Kathua and Rajouri. The introduction of new medical colleges will promote affordable medical education in the Union Territory, besides creating added job avenues and enhancing healthcare standards in the government sector. श्रीनगर के बाद वी गॉट द जेएमसी अनंतनाग प्रेफरेंस, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद की बात है. नॉट फॉर अस ऑल्सो, बाकी जो असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर है उनकी भी अलॉटमेंट होगी टू द रेस्पेक्टिव कॉलेज, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा. साउथ कश्मीर के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिला है यहाँ पे. जो स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता था श्रीनगर या जम्मू और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, तो उससे वो प्रॉब्लम जो है बहुत रिड्यूस हुई है. और यहाँ पे जो लोकल लोग भी है वो भी डिफरेंट पीजीज या हॉस्टल्स इनॉग्रेट करके उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है. जो प्राइवेट एमबीबीएस हो रहा है बांग्लादेश में हो रहा है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान में होता है, जहाँ हो रहा है बहुत ही ज़्यादा महंगा हो रहा है और वो हर किसी के लिए इकोनॉमिकली साउंड नहीं रहता कि मतलब हर कोई एफोर्ड कर सके. तो उस वजह से कि हमारा एक तो इकोनॉमिकल सेव भी हो गया, दूसरा हमारा फ्यूचर भी सेव हो गया. बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है यहाँ पे, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है और अच्छे से पढ़ाते हैं. Now, with an aim to improve the medical problems of people living in far-flung and remote areas, the Army organized a medical camp in Rajouri district of Jammu region. People living in remote villages are devoid of basic medical facilities. In such a situation, they are forced to travel long distances through difficult terrain to get basic medical facilities. Such initiatives by the Army have not only enabled patients to be treated closer to their homes, but also helped in increasing awareness about cleanliness, hygiene and healthy living. Medicines were distributed to patients. The medical staff also provided counseling on hygiene and sanitation, importance of clean drinking water and modern-day health lifestyle-related diseases. Let's now get you some international news. And more than 1,000 people rallied in a park in Hong Kong's financial district on Sunday, chanting slogans for democracy as they huddled under a sea of umbrellas. The crowd, a mix of young and elderly people, wore black and turquoise surgical masks to hide their identities as they listened to organizers speaking on a makeshift stage. A long black cloth depicting Hong Kong protest timeline was set on the ground for participants to pen their thoughts. Hong Kong has been convulsed by more than 6 months of protests, triggered by a now withdrawn bill that would have allowed extraditions to mainland China, where courts are controlled by the Communist Party. The demonstrations have since evolved into a broader pro-democracy movement and become more confrontational over the festive season. More protests are planned in the next few days, including a countdown to New Year's Day and a march on the 1st of January that could attract a big crowd. Voters in Guinea-Bissau began casting ballots on Sunday in a runoff presidential election pitting two former prime ministers who both promised to bring stability to the turbulent West African nation. Incumbent President Jose Mario Vaz
failed to make it to the second round after a 5-year term marred by regular high-level sackings, a barely functioned parliament and weeks of turmoil in the run-up to the first round of ballot. Voters at the polls emphasized the need to solve the country's social and economic problems, as well as the need for unity and peace in the country, which has suffered 9 coups or attempted coups since independence from Portugal in 1974. The ruling PAIGC party's Domingos Simoes Pereira, who's 56 years old, is seen as the front-runner after winning the first round on the 24th of November with 40% votes. His opponent, Omaro Chichesco Embalo, who's 47, came second with 28%, despite being a relative political newcomer, and political analysts say the runoff race could be close. And that's all we have for the moment in this edition of News, but for all the latest, stay tuned to DD News and DD India.